वेलकम टू ओडिशा CHSE क्लासेस को। तो आज आम आलोचना करवा +2 सेकेंड ईयर जो भक्ति मोमेंट भक्ति धर्म आंदोलन से भक्ति धर्म आंदोलन किसी इम्पोर्टान्स लाइन्स के में पढ़ा। ओके, भक्ति मोमेंट जोटा कि ए भक्ति मोमेंट ए स्पिरिचुअल एंड सोशल रेनांसा गोटे नवजागरण। ओके, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। ओके, तो द भक्ति मोमेंट भक्ति आंदोलन भक्ति मोमेंट 7th to 17th century was a transformative religious and cultural movement in India, Bharatore. Okay, that emphasized personal devotion of bhakti over caste rituals and orthodoxy. It promoted equality, religious harmony, and devotion as the path to salvation. तामाने ए भक्ति धर्मर बा भक्ति आंदोलन मुख्य लक्ष्य जे आम किपर भाव में ईश्वर निकट में पहुँच पार। तो ये विभिन्न जितेबाला प्रिचर्स माने आसबे, तीर्थंकर माने आसबे, तो ये आमको देखा पड़ो से मतरे अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन भक्ति इज द बेस्ट मेथड। भक्ति हेउची ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम। ओके, ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन एमर्ज इन साउथ इंडिया 8 to 12th century with the alvars means विष्णु devotees जो माने विष्णु को पूजा करछन्ते। तो देन नायनार्स शैव devotees जो माने शिव को पूजा करछन्ते, who expressed devotion through poetry and hymns in local language. ओके, लोकल लैंग्वेज रे विभिन्न पोएट्री एवं श्लोको द्वारा लोक मान को बुझाउछन्ति। ग्रेजुअली स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग हिंदुइज्म एंड काउंटरिंग द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। डिक्लाइन तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म लोप पाईगलानी। ओके, द कोर फीचर्स ऑफ द भक्ति मोमेंट्स ये भक्ति मोमेंट आम जो देखुचे। ओके, द कोर फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट devotion over the rituals. The moment emphasized pure devotion or bhakti to God, क्या भक्ति करी ना भगवान को, over complex rituals and priestly intermediaries. Then equality and social reform. It rejected caste discrimination. जो कास्ट जाति को लेकिन जो विभिन्नता देखा होता, it rejected and promoted the idea that all individuals regardless of their background could attain spiritual liberations. ये जो core features. Then personal relationship with God. Devotees believed in a direct and personal connection with God through किपरि भाव डायरेक्ट रिलेशन रखिपारे थ्रू लव, प्रेयर एंड ए सरेंडर, आत्मसमर्पण। ओके, सिंप्लिसिटी इन लाइफ एंड वर्शिप। सिंप्लिसिटी भक्ति सेंट्स भक्ति धर्मर प्रचारक माने। ओके, भक्ति सेंट्स एनकरेज्ड ह्यूमिलिटी, डिवोशन एंड सर्विस एज द की प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। देन यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत Bhakti saints composed their poetry and
ହାଇମ୍ସ ଇନ୍ ରିଜନାଲ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମେକିଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚିଙ୍ଗସ୍ ମୋର୍ ଆସେସିବଲ୍, ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବୁଝେଇଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋର୍ ଆସେସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଦେନ୍ philosophical aspects of Bhakti movement. Philosophical. The Bhakti philosophy emphasized a deep emotional and spiritual devotion to God with key principles of including जोड़ाक जो concept गुड़ाक दिए ओके concept of God सगुण भक्ति okay devotion to a deity with for Krishna, Ram, Vishnu, followers Tulsidas, Mirabai. Nirguna Bhakti, Saguna Nirguna. Worship of a formless divine entity, followers Kabir or Guru Nanak. Path of salvation. मोक्ष व निर्वाण किपरि पाई परिबे जो मोक्ष could be attained through pure love, vishwas, faith and devotion rather than rituals. Devotion bhakti rahiba dwara. Then unity of religions, saints like Kabir, Guru Nanak blended Hindu and Islamic thoughts advocating religious harmony. Then comparison of Alvars and Noyanars. Religious affiliation. Alvars Vaishnava saints. Okay, Noyanars Shaivitic saints. Okay. टाइम पीरियड मध्य दुईटाक दिखाई ओके की सेंट्स ओके मेजर लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिटेल्स दिखाई जब स्क्रीनशॉट नवा कथा मध्य नहीं जिबे स्क्रीनशॉट नहीं जानते मध्य ओके ये सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति तार मीनिंग वर्शिप ऑफ ए पर्सनल गॉड with from सगुण वर्शिप ऑफ ए फॉर्मलेस abstract divine presence निर्गुण ओके concept of God then तार prominent saints माने तुलसीदास मीराबाई सूरदास श्री चैतन्य महाप्रभु रामानुज संत एकनाथ त्यागराज कबीर नानक दादू दयाल रविदास नामदेव बुले शाह ओके देन लिटरेरी वर्क्स सब कौन रहा तुलसीदास कौन लिखिं रामचरितमानस सूरदास सूरसागर भक्ति सॉन्ग्स ऑफ मीराबाई आल्भार नयनार हाइम्स देन बीजक नामक ग्रंथ कबीर लिखिं गुरु ग्रंथ साहेब स्क्रिप्चर दोहास ऑफ कबीर एंड रहीम अवनाग्स एंड ऑफ नामदेव एंड तुकाराम. The Bhakti movement was shaped by saints across India who preached love, devotion and social equality through poetry and teachings. Then South India रे रामानुजंकर टाइम पीरियड दिखाई प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट द्वैत qualified non-dualism, advocated social inclusivity
and Vishnu Bhakti. Madhavacharya, founder of the Dvaita philosophy. Which is the founder of Dvaita philosophy. Dvaita Matavadar Pracharaka. Okay. Dualism. Some emphasized absolute devotion to Vishnu. Then Anamacharya, pioneer of Telugu Kirtans, composed hymns dedicated to Lord Venkateshwar, influencing Carnatic music. Ballavacharya, founder of the Pushti Mark, path of grace, preached Krishna Bhakti and Shuddha Dvaita, pure non-dualism. Tyagarajas, a Carnatic music legend, composed Panch, Pan, Pancharatna Kirtis in devotion of to Lord Rama. Okay, Basavana, founder of the Lingayat, okay, movement in Karnataka, opposed casteism, Brahminical orthodoxy, idol worship, and Vedic rituals, advocated monotheism, gender equality, and social justice through Bachanash, okay, Kannada, Kannada devotional poetry, established the Anubhav Mantap, a democratic religious forum promoting equality, worshipped Shiva as Ishtalinga, okay, personal lingo worn by devotees, rejected casteism, Vedas, and elaborate rituals, emphasized the kayak, honest work, and dosaha, charity and wealth sharing. North India, Ramanand, disciple of Ramanuja, broke caste barriers in bhakti, Guru to Kabir, Tulsidas, and Ravidas. Kabir Das, କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓକେ ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଓକେ ସୁରଦାସ କୃଷ୍ଣ ଡେଭୋଟିଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁର ସାଗର ଓକେ ମୀରାବାଇ Lord Krishna, numerous bhajans. Ravidas, disciple of Ramananda, rejected caste hierarchy and promoted equality and personal devotion, believed in a formless God, Nirguna Bhakti. His verses are included in the Guru Granth Sahib. Okay. Founded the Ravidasya sect, which of the following teachings? Which follows the teachings? किए कौन सब कहते ओके composed of Angas okay PDF free okay Jayadev wrote Gita Govinda detailing the divine love of Radha and Krishna. The Bhakti movement was a transformative force in Indian history, advocating devotion, love, and unity beyond religious and social barriers. It fostered a sense of inclusivity, inspired spiritual creativity, okay, and paved the way for a more egalitarian society. Its legacy continues to influence Indian religious and cultural traditions, making it a cornerstone of the country's spiritual heritage. Okay.
तो ओडिशा CHS को आपने सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु विभिन्न +2 सेकेंड ईयर सिलेबस हिसाब से सब किसी कोर्सेस गुड़ा अपलोड करा जाउची ओके तो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू टू ऑल थैंक यू।